Hi everyone, welcome or welcome back to our channel. So finally we have come towards the last part of BNS MCQ series जो कि हम आने वाले AD APO जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. So if you are new to the channel, please चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इसके प्रीवियस पार्ट्स अगर आपको देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप उसे ज़रूर प्रैक्टिस करें. एंड अगर आप BNS की MCQs के लास्ट पार्ट पे आज हमारे साथ पहुंच गए हो तो इसके बाद आप BSA के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो. BSA के क्वेश्चंस भी हमने सिमिलर वे में एविडेंस के साथ कंपैरिजन में मेमोरी ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेनेशंस के साथ सॉल्व किए हैं, तो आप उसे भी चेकआउट करें और अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट दें. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन. सो चलिए आज की वीडियो फिर शुरू करते हैं. आज हमने रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी से शुरू करना है, which is under 3117 of BNS. It was 410 under IPC. और 410 में सिर्फ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन ही किया था, उसके बाद उसकी पनिशमेंट्स और उसके एग्रेवेटेड फॉर्म सारे फर्दर नेक्स्ट सेक्शंस में हमें अवेलेबल थे. बट 3117 के सब सेक्शंस बना दिए गए हैं. जैसे फर्स्ट में 4110 की सारी डेफिनेशंस इसमें डाल दी, सेकंड में पनिशमेंट्स हैं, देन सब्सिक्वेंटली जितने भी एग्रेवेटेड फॉर्म्स थे उसके सब सेक्शंस बना दिए गए हैं. इसमें हम सबसेक्शन 4 याद रखेंगे विच इज़ अबाउट डिकॉइटी. ठीक है, डिकॉइटी से अगर कोई भी आप रिसीव कर रहे हो स्टोलन प्रॉपर्टी तो वो यहाँ फोर्थ सबसेक्शन में कवर्ड है 3117, तो इसका नंबर हम याद रखेंगे. ऑल्सो जो सबसेक्शन फर्स्ट है जो इनिशियली 410 था उसमें चीटिंग मिसिंग था. अगर चीटिंग से कोई प्रॉपर्टी हम रिसीव कर रहे थे तो वो इंक्लूडेड नहीं था IPC में इनिशियली, तो अब वो 3117 में ऐड हो गया है. तो चीटिंग का ऑफेंस न्यू एडिशन है, ये हम याद रखेंगे. सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. स्टोलन प्रॉपर्टी एज पर 3117 ऑफ BNS इंक्लूड्स प्रॉपर्टी पोजेशन वेयर ऑफ हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, चीटिंग. सो चीटिंग इंक्लूडेड है, येस. प्रॉपर्टी हैज़ बीन क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएटेड, येस. इन रिस्पेक्ट ऑफ विच क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज़ बीन कमिटेड, सो येस, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. So in an offence under 3117 of BNS, the actus reus is in respect of actus reus means act क्या होगा, act होगा कि आपके possession में stolen property पाई जाएगी. Then whoever dishonestly receives or retains any stolen property knowing or having reason to believe the same to be stolen shall be punished with. So इसकी punishment क्या है? इसकी punishment है 3 years or with fine or with both. ठीक है. नेक्स्ट चीटिंग की भी एक बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं. चीटिंग इनिशियली हमें मिल रहा था 4115 में, सो विच इज़ नाउ 3118 अंडर BNS. सो 4115 में सिर्फ चीटिंग डिफाइंड थी और फर्दर जितने भी सेक्शन थे उसमें उसकी अगेन पनिशमेंट्स और एग्रेवेटेड फॉर्म्स थे. बट 3118 के सब सेक्शन 2 में ही उसकी पनिशमेंट डाल दी है और एग्रेवेटेड फॉर्म्स भी 3118 में ही है. देन 3119 में पर्सोनेशन की बात हो रही है. ठीक है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन वो 319 में अब आ गया है. और एक 420 सेक्शन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IPC, इसमें जिसमें प्रॉपर्टी डिलीवरी होती है, तो उसका नंबर हमें याद रखना इम्पॉर्टेंट है विच इज़ 3118 सबसेक्शन 4. तो ऐसे ही ये नंबर्स हम याद रखेंगे और बाकी जितनी डिस्कशन होगी फर्दर करते हैं. डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग एनी पर्सन इन डिलीवरिंग एनी प्रॉपर्टी. सो इसमें जो मेंजरिया है, मेंजरिया डिसेप्शन का होना चाहिए. ठीक है, तभी चीटिंग का ऑफेंस बनता है. और ये जो डिसेप्शन का मेंजरिया है ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग होना चाहिए. ऐसे नहीं है कि सब्सिक्वेंटली फॉर्म हो गया. ठीक है. सो डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग एनी पर्सन इन डिलीवरिंग प्रॉपर्टीज, चीटिंग. डिसेप्शन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग, इट्स चीटिंग, इसका मेंजरिया है ये. देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस अंडर BNS इज एन ऑफेंस कॉजिंग हार्म टू डैमेज टू बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, सो इट्स चीटिंग. फॉर ऑफेंस ऑफ चीटिंग क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? पर्सन डिसीव्ड मस्ट हैव बीन फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूस्ड टू डिलीवर प्रॉपर्टी. कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटेंशनल इंड्यूसमेंट, डैमेज और हार्म इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टीज caused or likely to be caused to person deceived. So both are correct. Then for offense of cheating, intention to cheat should be present right from the beginning. Then the point of difference between extortion and cheating lies in the way of obtaining consent.
एक्सटॉर्शन में क्या होता है, इंस्टेंट फियर होता है. देन A intentionally deceives Z into belief that A has performed A's part of contract made with Z which he has not performed and thereby dishonestly induces Z to pay money and A has committed. So intentionally उसको deceive किया है, deceive किया तो ये cheating बन रहा है, right? तो इसके options देख लेते हैं. criminal breach of trust नहीं होगा, इसमें entrustment चाहिए होती है हमें. Then criminal breach of trust again by public or बैंकर मर्चेंट नहीं होगा. डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी भी नहीं होगा, यहाँ कुछ मिसअप्रोप्रिएट नहीं किया. सो इट विल अमाउंट टू चीटिंग अंडर 3118 सबसेक्शन 1. ए बाय प्लेजिंग एज डायमंड्स द आर्टिकल्स विच ही नोज आर नॉट डायमंड्स इंटेंशनली डिसीव जेड एंड thereby dishonestly induces A to lend money. What offence has been committed by A under BNS? So it's cheating. To sit at examination falsely personating another, signing papers in another's name amounts to. Personating another means cheating by personation और sign किया है, that amounts to forgery. ठीक है, cheating by personation as well as forgery. Then इसका forgery का नंबर है 336 presently under BNS. Then A is not a servant in income tax department but showing himself as income tax officer putting raid in B business center gets valuable articles. Thus he has committed cheating by personation. Which of the following sections of BNS relates with punishment for cheating? punishment कहाँ दी है, तो 3118 के 2 में दी है. Which of the following sections of BNS defines and punishes cheating by personation? So it's under 3119. A cheats by pretending to be B, person who is deceased. A is liable to be punished on. तो punishment पूछी है of personating another, so it's under 3119(2). Then next topic is mischief. Mischief was initially covered under 425. It is now 324 of BNS. So mischief क्या होता है, अगर wrongfully आप किसी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, उसका लॉस कर रहे हो किसी तरीके का, उसकी वैल्यू डिमिनिश हो रही है उससे, तो दैट अमाउंट्स टू मिसचीफ. देन मिसचीफ के आगे अग्रेवेटेड फॉर्म्स हैं, वो 325 में कवर्ड हैं, एज इन किसी एनिमल के ऊपर मिसचीफ हो रहा है. देन फायर वाले सेक्शंस हैं, देन वो 326 में कवर्ड है. देन अगेन जो पनिशमेंट है 324 की जो मिसचीफ की, वो भी इसके सबसेक्शंस में ही कवर्ड है. ठीक है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ BNS डिफाइंस मिसचीफ? इट्स अंडर 324. एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? इंटेंशन टू कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इंटेंशन टू चेंज नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, intentionally causing wrongful loss or damage to the property of another by destroying or diminishing its value. So this is more appropriate. wrongful loss या damage कर रहे हो किसी की प्रॉपर्टी पे और उससे उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही है या फिर उसकी वैल्यू डिमिनिश हो रही है. Then A gave B a pen drive which he knows he has files that were infected with a virus. A did not inform B of the same. B inserted the pen drive into his computer and opened the files. His computer was infected by virus and most of the files on it were lost. Which of the following offences can A be held guilty of? So he is guilty of mischief. Which of the following sections of BNS relates with punishments for mischief? Punishment कहाँ दी है? Subsection 2 में. Which of the following sections of BNS provides for punishment of mischief by killing or maiming animals? So it's 325. A having joined property with Z in a horse, intending thereby to cause wrongful loss to Z, shoots the horse. Which of the sections of BNS A shall be charged with? So horse, as in it's relating with animals. So it's 325. A having insured a ship voluntarily causes the same to be cast away with the intention of causing damage to the underwriters. A has committed offence of, so he has committed offence of mischief under 324. A voluntarily throws into river a ring belonging to Z with the intention of thereby causing wrongful loss to Z. A commits, so he commits mischief. So these illustrations of mischief are very important. और टाइम एंड अगेन अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो यही इन इलस्ट्रेशन से बनता है मिसचीफ का. सो सारी इलस्ट्रेशन बहुत ध्यान से हम पढ़ के जाएंगे. देन ए वॉलंटली बर्न्स अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी बिलोंगिंग टू जेड इंटेंडिंग टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू जेड. ए हैज़ कमिटेड ऑफेंस ऑफ मिसचीफ. A causes cattle to enter upon the field belonging to Z intending to cause damage to Z's crop. A has committed offense of mischief.
A voluntarily burns a valuable security belonging to Z intending to cause wrongful loss to Z. A has committed offense of mischief. Then next, criminal trespass. Criminal trespass and house trespass is covered under one section only, which is 33329. क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास एक ही सेक्शन में कवर्ड है. देन हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग. हाउस ट्रेसपास प्लस हाउस ब्रेकिंग इज कवर्ड अंडर 330. राइट, हाउस ब्रेकिंग 332 में है. इसमें एक लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस सारे मेंशन है कि अगर ऑफेंसेस नहीं, लिस्ट मेंशन है कि कैसे अगर आप ऐसे वाले काम करोगे तो दैट विल अमाउंट टू हाउस ब्रेकिंग. So that will amount to an offense. So further questions करते हैं. Criminal trespass has been defined under 329. Trespass means किसी के घर में without उसकी permission चले जाना. ठीक है. B enters into house of A without obtaining A's permission to congratulate him on his success. What crime was committed by B? तो कोई crime तो किया ही नहीं, वो तो सिर्फ wish करने गया था उसको. So it does not amount to any offense. So X with a view to murder Y enters Y's bedroom at night when Y is out of station. X is guilty of, so X will be guilty of attempt to murder as well as house trespass. So both अगर होते तो that will be the more appropriate answer. Then offense of criminal trespass is complete when a person enters upon the property in possession of another with intent to commit. क्या commit करने के लिए जाएगा? कोई भी offense हो सकता है. ठीक है. In which of the following sections of BNS lurking house trespass has been defined? Lurking trespass means जो छुप के करते हैं. ठीक है. It's defined under 331. Trespass being made in surreptitious manner, that is concealment, is called lurking house trespass. A finds the key of Y's house door which Y had lost and commits house trespass by entering Y's house having opened the door with the key. What offence A has committed? So he has committed house breaking. Z, the doorkeeper of Y, is standing at Y's doorway. A commits house trespass by entering the house having deterred Z from opposing him by threatening to beat him. He has committed house breaking. A enters Z's house through a window. He commits house breaking. A commits house trespass by making a hole through the wall of Z's house by putting his hands through the aperture. Which offence is A liable for? He is liable for house breaking. X, having been invited for a party, enters the property of A. X's invitation is however only confined to the lawns outside the dwelling house of A's property and for duration of the party. After the end of party, X hides in the bushes and waits for other guests to leave. Thereafter, X opens a lock in A's dwelling house and enters with the intent to annoy A without being seen by A. What offence has been committed by X? So it amounts to house breaking. Then Ram, while going on pilgrimage, entrusted a box of containing a jewelry to his neighbor Sham. Sham, dishonestly with the intent to commit mischief, breaks open the box without having any authority. Sham has committed offence of, so he has committed offence of 334 subsection 2, which is dishonestly breaking open receptacle containing property. Then match the following, list 1 and list 2. डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ होती है? डिलीवरी होती है एक्सटॉर्शन में. टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज अंडर थेफ्ट, इंट्रस्टमेंट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कन्वर्टेबिलिटी इन मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. सो A4 B3, so B is the right code. Then which of the following is not a correct match? एक्सटॉर्शन 308, डिकॉयटी 310, रॉबरी 304 नहीं 309 होता है, theft 303. So C is the right answer. Then offences relating to documents and property marks. So this is the chapter number क्या है इसका पहले वो देख लेते हैं. So इसका chapter number है 18. Then इसके जो main sections हैं वो देखते हैं. 335 is about making false document बनाना.
Then 336 most important, which is forgery. Then forgery के भी further subsections हैं. सेकेंड वाले में पनिशमेंट दे रखी है. फोर्थ इज़ अबाउट रेपुटेशन. थर्ड इज़ अबाउट चीटिंग. सो ये हमें ध्यान में रखना है. ऑल्सो फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी एंड विल्स का एक स्पेसिफिक सेक्शन है विच इज़ 338. सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन. इसको भी नंबर को हम ध्यान रखेंगे. ठीक है. और 340 का नंबर हम याद रखेंगे. वाई? बिकॉज इट्स अबाउट फॉर्ज डॉक्यूमेंट और ई रिकॉर्ड्स. ठीक है. तो ई रिकॉर्ड्स इज़ eventually very important for our upcoming exams. So forged document or e-record or using it as genuine is covered under 340. ठीक है. Then further question solve करते हैं. The offence of forgery is committed as regards to government currency notes and documents or e-records. So yes, it's about document and e-records. Which of the following provisions of BNS defines making a false document? Define कहाँ है? 335 में, the first section of this chapter. Then making a false document a part of a document with any of the intent specified in section 336(1) of BNS constitutes forgery. Punishment for offence of forgery will is prescribed under, it's given under 336(2). A prepares a mark sheet with intention to use it as original to secure a job. Under BNS, he is said to have committed offence of, so he has committed forgery. Then A, having lost the receipt for debt which he has paid to B, makes out another receipt for himself, and when B sues him, put up the made up receipt in the evidence. In this case, A is guilty of offence of forgery. A signs his own name to the bill of exchange, intending that he may be believed that bill was drawn on another person's name. A has committed forgery. A puts jewels into box of Z by intention that he may be found in that box, and that the circumstances may cause Z to be convicted of theft. A has committed offence of fabricating false evidence. Z's will contain these words: I direct that my remaining property will be equally divided between A, B, C. A dishonestly scratches out B's name, intending that he may be believed that whole was left to himself and C. What offence A has committed under BNS? So it's offence of forgery. Which section of BNS is related to property mark? प्रॉपर्टी मार्क वाला कौन सा सेक्शन है? इट्स 345. देन विच सेक्शन ऑफ BNS इज रिलेटेड टू काउंटरफीटिंग प्रॉपर्टी मार्क? सो इट्स अंडर 347. देन नेक्स्ट एंड द सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ BNS, इट्स चैप्टर 19. टोटल 20 चैप्टर्स हैं. 20th चैप्टर में सिर्फ बस एक ही सेक्शन है विच इज़ रिपील. कौन सा नंबर है? 358. दैट IPC इज़ नाउ रिपील्ड. ठीक है. तो 19th चैप्टर टेक्निकली लास्ट ही है. तो 19th चैप्टर में हमारे पास क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, इंसल्ट, अनॉयंस, डेफेमेशन के सेक्शंस भी हैं इसी में, और मिसकंडक्ट कर रहा है कोई ड्रंकर्ड पर्सन तो वो भी है. और इसके 2 सेक्शंस ऐसे हैं इसमें जिसमें कम्युनिटी सर्विस दी जा सकती है. ठीक है. वो हम फर्दर डिस्कस करते हैं साथ साथ. देन फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन मीन्स विच सेक्शन डिफाइंस एंड पनिशेस क्रिमिनल इंटिमिडेशन? कहाँ डिफाइंड है? 351 में. ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन इन्वॉल्व्स असॉल्ट, बैटरी, एफ्रे, थ्रेट. सो इट इन्वॉल्व्स थ्रेट. A places men with firearms at outlets of building and tells Z that they will fire at Z if Z attempts to leave the building. What offence has A committed? So A has committed both wrongful confinement and criminal intimidation. एक तो उसको wrongfully confine कर दिया अंदर और बोला कि अगर बाहर निकलोगे तो फिर harm पहुँचाएंगे as in they will fire at Z. So both of these are correct. Intentional insult with the intent to provoke breach of peace is punishable under section 352. Then for purpose of inducing B to desist from prosecuting a civil suit, threatens to burn B's house. What offence has been committed by A is guilty of? So is guilty of criminal intimidation. So threat किसी भी चीज़ का हो सकता है. थ्रेट हो सकता है किसी इंजरी पहुंचाने का. इंजरी किसी भी चीज़ की हो सकती है, टू बी माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी और टू द पर्सन. देन फॉल्स स्टेटमेंट, र्यूमर एक्सेट्रा सर्कुलेटेड विद इंटेंट टू कॉज म्यूटिनिटी और ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक पीस इज डेल्ट अंडर
353. Criminal intimidation by anonymous communication or having been taken precautions to conceal whence the threat comes is covered under 351(4). तो ये याद रखेंगे, प्री में डायरेक्ट इसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं. Then which of the following provisions of BNS punishes to misconduct in public by a drunkard person? तो drunkard person वाला कौन सा है नंबर? It's 355. इसमें कम्युनिटी सर्विस आप दे सकते हो. Then minimum duration of imprisonment provided for offence under BNS, minimum कितनी है? So it's 24 hours under 355. Then what is the maximum period of imprisonment which can be imposed by person who is in state of intoxication? So maximum भी कितनी है? 24 घंटे ही है. Then next defamation. Defamation कहाँ defined है? It's defined under 356. Then offence of defamation relates to harming association of person, property, family, reputation of person. So it's about reputation of a person. Defamation is a immoral act, unethical behavior by media, corrupt indecent behavior in public, civil wrong and criminal offence. So it's both civil wrong and a criminal offence. Defamation can be only of a living person, of a living as well as deceased person, of individual, company, association or collection of persons. So it's both B and C, of living as well as deceased person. So अगर होता तो ऑल ऑफ अबव भी हो सकता था, बट यहाँ दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट कि लिविंग प्लस डिसीज, इंडिविजुअल, कंपनी, एसोसिएशन एंड कलेक्शन ऑफ पर्सन, सबका ही हो सकता है. व्हाट इज़ नॉट अ डेफेमेशन? नॉट अ डेफेमेशन पूछा है पब्लिकेशन ऑफ एनी इम्प्यूटेशन, इम्प्यूटेशन टू डिसीज्ड पर्सन, इम्प्यूटेशन टू कंपनी, ओपिनियन रिगार्डिंग पब्लिक कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट. सो ओपिनियंस आर नॉट डेफेमेशन. How many exceptions have been provided under offence of defamation? So there are 10 exceptions. Which of the following statement is false with respect to offence of defamation under section 356 of BNS? So false देखना है. It is not defamation to impute anything which is true concerning any person if it is to be for the public good. That imputation should be made or published whether or not it is for public good is a question of fact. So yes, it is not a defamation कि अगर it is for the public good. ठीक है. So this is true. It is defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the conduct of public servant in discharge of public functions or respecting his character so far as his character appears in the conduct and no further. So it is not a defamation आएगा क्योंकि good faith में आप कुछ भी कर मतलब opinion दे सकते हो. So this is false. बाकी भी पढ़ लेते हैं. It is not a defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the conduct of any person touching any public question and respecting his character so far as his character appears in that conduct and no further. So yes, this is true. It is not an defamation. It is not a defamation in a person having over another any authority either conferred by law arising out of lawful contract made with other to pass in good faith any censure or conduct of that order in that matters to which such lawful authority relates. So yes, this is also correct. So B is the false statement which they asked. Then next, 8th one, on an account of agitation the lawyer ceased to participate in the court proceeding and restored to satyagraha. An editorial in a newspaper criticized as to whether it behaves to the lawyers as a class to resort to strike. The lawyers were inter alia described as Kayya Dalal, that is dispute broker, in editorial. The editor of newspaper is guilty of offence of defamation. So he is not guilty of offence of defamation. So not only editors but the chairman of the board of directors and the general managers are also guilty of defamation. So he is not guilty of defamation because उसने अपना opinion express किया. Then A in good faith says of a book published by Z that Z's book is indecent. Z must be a man of impure mind. Is this defamation punishable under 356 of BNS? So no, because it falls within the one of the exceptions of 499, which is now 356. Then next, a magistrate is making a report to superior officer about B's character imputation made in good faith and for public good. A commits, so he commits no offence. It is within the exception of 356. Which one of the following statement is not defamatory? A says about women, B that she has paramount wherever she goes.
A publishes a photograph with the false caption Gunda. A says, I am not surprised that B's book is foolish, that he is libertine. A, in the course of police investigation, says B may be involved in the murder of D because both of them were bitter enemies. So here D does not amount to defamation. Then the following are the exceptions to defamation: imputation of truth for public good, public conduct of public servants, literary criticism, all of above. So all of above are exceptions to defamation. So which one is not an exception of defamation under 356 of BNS? Not पूछा है, कौन सा नहीं होगा? So it's public conduct of public servant is included. Malicious statements will not be included. Conduct of person touching any public question, yes. Publication of reports and proceedings of court. So B will be the right answer. An imputation in the form of alternate or expressed ironically may amounts to defamation. So yes, it will amount to defamation. Then A, or shopkeeper, to protect his own money, says to B, who manages his business, sell nothing to Z unless he pays you ready money, for I have no opinion of his honesty. A is not liable for defamation. So he is just warning his employee. Then which of the following is the defamation? X says Y is an honest man. He never stole Z's watch, intending to cause it to believe that Y did steal Z's watch. Then X is asked who stole Z's watch. X points to Y. X draws a picture of Y running away with Z's watch. So all of above is correct. Then in an answer to charge of defamation, which of the following is or are good defenses? So कौन सा good defense है? Imputation which is true and published for public good, right? Opinion respecting conduct of public servant concerning discharge of duties of office expressed in good faith. So both of these are good defenses. A says Z is an honest man, but he never stole B's watch, intending to cause to believe that Z did steal B's watch. A is liable for, so he is liable for defamation. Then under BNS, which of the following amounts to defamation? So to make an imputation concerning a company or association or collection of persons as such, to convey a caution intended for good of person to whom conveyed for public good, censure pass in good faith by a person having lawful authority over others, publication of reports of proceedings of court. So B is the correct option. It amounts to defamation. So by this we have come to the end of this series. Thank you very much if you have watched the entire series, and if you find it यूज़फुल, अगर आपको कुछ भी थोड़ा भी वैल्यूएबल लगे तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स, एंड एनी कमेंट्स एंड सजेशंस आर ऑलवेज